Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to this new lecture. Dear students, in today's lecture, we will resume chapter number 9 again, and we will study an important topic of this chapter, that is classification of triploblastic animals. As you know that in the previous lecture, we studied the diploblastic and triploblastic animals in detail, and today in this lecture we will study the classification of triploblastic animals. The triploblastic animals are classified into three groups on the basis of absence or presence or type of body cavity or coelom. यानी बॉडी कैविटी जिसे सीलोम भी कहते हैं, इस सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पे कि आया इनमें ये बॉडी कैविटी है कि नहीं है, और अगर है तो किस किस्म की बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है या फॉल्स बॉडी कैविटी है जिसे सूडोसीलोम भी कहते हैं। तो इस बेसिस पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. So acoelomates, those triploblastic animals which have no coelom or body cavity, they are called acoelomates, and those triploblastic animals which have coelom but false coelom, not true coelom, that is pseudocoelom, they are called pseudocoelomates, and those triploblastic animals which have true coelom, they are called coelomates. So dear students, before studying these three groups of triploblastic animals, let me remind you that in this diagram we studied that the kingdom Animalia includes multicellular animals or metazoans, and they are divided into two groups: the pseudometazoans and eumetazoans. The eumetazoans, which are the true multicellular animals, they are divided into diploblastic and triploblastic animals. We have already studied it in detail. And the triploblastic animals are then divided into these three groups: acoelomates, pseudocoelomates and coelomates, on the basis of absence or presence or type of body cavity or coelom, right? And in the next lecture, inshallah, we will study the classification of coelomates into protostomes and deuterostomes. Now dear students, let me also remind you once again that what are triploblastic animals. So we have studied that those animals which have ectoderm, mesoderm and endoderm during embryonic stage and then undergo organogenesis, they are called triploblastic animals, right? कि वो एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होता है और उसके बाद उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मतलब ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. Such animals are called triploblastic animals. And you know that the three-layered embryo is called gastrula. यानी gastrula जो है ये three-layered embryo है. Its outer layer of cells is called ectoderm. The middle layer is called mesoderm and the inner layer is called endoderm. यानी इनमें एनिमल्स में गेस्ट्रूला के बाद इनमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. सो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. So this is the structure of gastrula, the three-layered embryo showing three layers of cells: the outer ecto, the middle meso and the inner layer endoderm. And this cavity of the gastrula is called orchentron. It is also known as primary or primitive gut. The orchentron is also known as primary or primitive gut, gut. Primary or primitive gut or alimentary canal or digestive tube, क्योंकि इसी कैविटी से फ्यूचर में क्या बनता है,
एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब की कैविटी बनती है. And let me also remind you that this is blastopore. What is blastopore? The first opening of the embryo is called blastopore. We can also define the triploblastic animals as that those animals whose body wall is composed of three layers of cells are known as triploblastic animals. The three layers are ectoderm, the outer layer of cells, the mesoderm, the middle layer of cells, and the endoderm, the inner layer of cells. And you know that these three cellular layers appear only during embryonic development, that is gastrula stage. ये जो थ्री लेयर्स है एक्टो मीजो और एंडोडर्म, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं गेस्ट्रूला में, जो थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो होता है. लेटर ऑन दीज लेयर्स फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम. बाद में एडल्ट एनिमल में, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में इन तीन लेयर्स से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the ectoderm forms the nervous system and skin, the mesoderm forms the muscular system, skeletal system, and coelom. We are studying the types of triploblastic animals on the basis of coelom, the body cavity. So keep this point in mind that the coelom, the true body cavity, is formed by mesoderm, while the endoderm forms the digestive system. सो वंस अगेन कि ये जो तीन लेयर्स होते हैं एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो गेस्ट्रूला होता है उसी स्टेज में होते हैं, और एडल्ट ऑर्गेनिज्म में फिर इससे डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. एंड सो इट मीन्स दैट आफ्टर embryonic development, that these layers are represented by the structures formed from them. यानी इन लेयर्स से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, वो ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट्स द एक्टोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो. द डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट्स द एंडोडर्म. The coelom represents, for example, the mesoderm layer of the embryo, right? So this is the triploblastic animals. This is about triploblastic animals. Now we will study the three classes of triploblastic animals. So once again, dear students, you know that the triploblastic animals are divided into three groups on the basis of absence or presence or type of body cavity or coelom, into acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. के बॉडी कैविटी और सीलोम के बेसिस पे कि इनमें सीलोम है कि नहीं है, और किस टाइप ऑफ सीलोम इनमें है, ट्रू सीलोम है कि फॉल्स सीलोम है. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के ये तीन ग्रुप्स है. नाउ बिफोर स्टडिंग दिस थ्री ग्रुप्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, first we will know about coelom, that what is coelom or how can we define coelom. Now dear students, what is coelom or how can we define coelom? So we can define coelom as a fluid filled space between the outer body wall, ectoderm, and digestive tract or digestive tube, endoderm. coelom क्या होता है? सीलोम एनिमल्स के बॉडी का जो आउटर कवरिंग होता है, यानी आउटर बॉडी वॉल होता है, और डाइजेस्टिव ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल या गट. तो इन आउटर बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है. दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस between the outer body wall and digestive tube or alimentary canal is known as coelom. And as you know that the outer body wall or outer body covering is formed from ectoderm, so the outer body wall represents the ectoderm, and the digestive tract, alimentary canal or gut is formed from endoderm, so the digestive tract or digestive tube or alimentary canal represents the endoderm. As earlier I told you that ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, दे आर
they appear only during embryonic development and later on they are represented by the structures formed from them. तो चूँकि ये जो आउटर बॉडी वॉल होता है एनिमल के बॉडी का आउटर कवरिंग जो होता है ये एक्टोडर्म से बनता है. सो द आउटर बॉडी वॉल रिप्रेजेंट्स एक्टोडर्म और जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है या एलिमेंट्री कैनाल होता है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म. सो द डाइजेस्टिव ट्यूब रिप्रेजेंट्स एंडोडर्म. So we can also say that a fluid filled space between the ectoderm and endoderm, that is the outer body wall and digestive tube. जो outer body wall होता है और digestive tube होता है या elementary canal होता है इसके दरमियान एक fluid filled space होती है या cavity होती है that is called coelom. Now dear students, look into this figure, this diagram given in your textbook, that it represents the classification of triploblastic animals and they have three groups: the acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. This is an acoelomate animal, the flatworm Platyhelminthes, right? और ये इसके बॉडी का एक सेक्शन है. This is a transverse section of its body. This one is pseudocoelomate. The nematoda phylum Helminthes are roundworm, and this one is the coelomate, the annelids and other animals, right? And these are the sections, the transverse sections of their bodies. Now dear students, look in first into this acoelomate. First look into this acoelomate. This is its body covering. ये जो blue layer है this is its body covering, and the body covering या the body wall, outer body wall या outer body covering is made or is formed from ectoderm. So the body covering or the outer body wall represents the ectoderm. ब्रैकेट में इसको लिखा है from ectoderm. बुक में ये गलती थी, यहाँ पे एंडो लिखा था लेकिन दिस इज एक्चुअली ectoderm. फिर ये जो रिट नजर आ रहा है दिस इज द मिडल लेयर. This is a tissue filled region. It represents the mesoderm. ये रेड जो लेयर है दिस इज mesoderm. और फिर अंदर ये जो येलो या ऑरेंज कलर का पार्ट है दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, and the digestive tract is formed from endoderm. It represents the endoderm. The digestive tract or digestive tube or alimentary canal, it is formed from endoderm, so it represents the endoderm layer, right? So dear students, we have defined coelom. That what is coelom? That a coelom क्या है? A fluid filled space between the outer body wall and digestive tract or digestive tube, or a fluid filled space between the ectoderm and endoderm. तो coelom क्या होता है? ये जो बॉडी कवरिंग है आउटर बॉडी वॉल है ये जो ब्लू, और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या डाइजेस्टिव ट्यूब है ये जिसको एंडोडर्म लिखा है, इनके दरमियान क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं. लेकिन इन केस ऑफ एसिलोमेट्स आप देख रहे हैं कि जो बॉडी कवरिंग है यानी आउटर बॉडी वॉल है ये ब्लू एंड एक्टोडर्म, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है एंडोडर्म है, इसके दरमियान कोई हमें स्पेस, कोई हमें कैविटी नज़र नहीं आ रही, बल्कि क्या लिखा है? ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी बॉडी कवरिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक के दरमियान ये जो रीजन है इट इज़ फिल्ड बाय अ टिश्यू. इसको लिखा है टिश्यू फिल्ड रीजन फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म. सो हियर द स्पेस बिटवीन द बॉडी कवरिंग यानी द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज फिल्ड बाय अ टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म. तो यहाँ पे कोई कैविटी, कोई स्पेस नहीं है. तो दोज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स which have no coelom, which have no body cavity between the outer body wall, the ectoderm and the digestive tract, the endoderm, such animals, such triploblastic animals are called acoelomates. इन animals को हम क्या कहते हैं? acoelomates कहते हैं. Now look into this structure of pseudocoelomates. यहाँ पे भी देखें, this is the blue one, the blue layer is the body covering the outer body wall.
which is formed from ectoderm. This is the digestive tract, which is formed from endoderm, and the red one is a muscle layer formed by mesoderm. यहाँ पे आपको आप देखें तो यहाँ पे हमें बॉडी कवरिंग एक्टोडर्म और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंडोडर्म के दरमियान एक स्पेस नज़र आ रहा है। ये वाइट एक कैविटी मौजूद है जिसको लिखा है सूडोसीलोम। इसको क्या लिखा है? सूडोसीलोम। यानी यहाँ पे बॉडी कैविटी है, सीलोम है, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है, फॉल्स सीलोम है या सूडोसीलोम इसे कहते हैं। तो दोज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विच हैव pseudocoelom or false body cavity, false coelom, such triploblastic animals are called pseudocoelomates. अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि what is meant by false coelom and what is meant by pseudocoelom. So later on I will explain that what is meant by pseudocoelom, कि false या pseudocoelom क्या होता है और true coelom क्या होता है। Now look into the structure of the coelomate. Same structure, body covering formed from ectoderm, right? The digestive tract is formed from endoderm, and the red tissue layer represents the mesoderm, right? So यहाँ पे बी सीलोम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये स्पेस है। बॉडी वॉल या जो बॉडी कवरिंग है एक्टोडर्म है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्यूब है जो एंडोडर्म है, इसके दरमियान ये जो वाइट है ये यहाँ पे भी बॉडी कैविटी है, सीलोम है, एंड दिस वन इज ट्रू सीलोम। सो दोज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विच हैव ट्रू सीलोम दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स। नाउ अगेन फिर आपके जहन में यही क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज false or pseudocoelom and what is meant by true coelom. So let's study or differentiate between the pseudocoelom and eucoelom, the false coelom and true coelom. So these are the three groups of triploblastic animals: the acoelomates, which have no coelom between the ectoderm and endoderm, between the outer body wall and digestive tract, right? And the pseudocoelomates, which have pseudocoelom between the outer body wall and digestive tract, and the coelomates, which have true body cavity or coelom between the outer body wall and digestive tract. Now dear students, look into this diagram. ये वही डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा और elaborated है। This one is acoelomate, the middle one is pseudocoelomate, and the true coelomate, right? Now dear students, look into first acoelomate. This is the black layer. This is the ectoderm or the outer body wall or covering. This blue is the endoderm or digestive tract or alimentary canal or gut, and this red one is the mesoderm. So what are acoelomates? Those triploblastic animals which have no coelom or body cavity between the outer body wall and digestive tract, the endoderm, they are called acoelomates. आप देखिए कि acoelomates में जो ये आउटर बॉडी वॉल है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसके दरमियान कोई स्पेस, कोई कैविटी नहीं है, बल्कि इट इज़ अ टिश्यू फिल्ड रीजन। ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस है, इट इज़ फिल्ड बाय अ टिश्यू formed by mesoderm. So those animals which have no coelom, they are called acoelomates. So once again, those triploblastic animals which have no coelom, body cavity between the outer body wall, ectoderm
and digestive tract endodome, they are called acoelomates, and the space between the ectoderm and endodome, yani between the outer body wall and digestive tract or alimentary canal, is filled with loose cellular tissues, एक टिश्यू से फिल हुआ है जिसको इधर मैंने लिखा भी है टिश्यू फिल्ड रीजन. दिस टिश्यू इज कॉल्ड mesenchyma or parenchyma which is formed by mesoderm. ठीक है, तो ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी आउटर बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान जो रीजन है, इट इज फिल्ड बाय अ लूज सेलुलर टिश्यू which is called mesenchyma or parenchyma, and there is no body cavity. So these animals are called acoelomates. Now look into the pseudocoelomates. This is again the black one. This is the ectoderm, the outer body wall, the outer body covering. The blue one is the endoderm or digestive tract or alimentary canal or gut, and this red one is the mesoderm which are muscle layer, right? So यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जो एक्टोडर्म है आउटर बॉडी वॉल है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ इसके दरमियान एक स्पेस है, एक कैविटी है, and this cavity is called pseudocoelom or false coelom. So those triploblastic animals which have false or pseudocoelom, they are called pseudocoelomates. Now dear students, what is meant by false coelom or pseudocoelom? If the body cavity, dear students अपने साथ पेन और पेज रखें और ये डिफिनेशन अपने साथ नोट करें, फिर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. What is false coelom? If the body cavity or coelom develops, if the body cavity develops between the mesoderm and endoderm, it is called false coelom. Dear students, look into this diagram. यहाँ पे हमारे पास ये जो pseudocoelom है, false body cavity है, तो इसको व्हाट इज फॉल्स बॉडी कैविटी, तो आप देखिए डायग्राम को, ये रेड जो है दिस इज मेसोडर्म. मेसोडर्म क्या बनाते हैं, मसल बनाते हैं. दिस इज अ मसल लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म. एंड दिस ब्लू वन ऑलरेडी आप जानते हैं कि दिस इज एंडोडर्म, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म. सो इफ द बॉडी कैविटी डिवेलप्स बिटवीन द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, अगर ये बॉडी कैविटी इस मेसोडर्म, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है ये इस मेसोडर्म, ये जो रेड लेयर है मसल लेयर है, और ये जो एंडोडर्म है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिससे बना है इसके दरमियान है. इफ द बॉडी कैविटी डिवेलप्स बिटवीन द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इट इज कॉल्ड false coelom or pseudocoelom, and those triploblastic animals which have pseudocoelom or false coelom, they are called pseudocoelomates. तो बॉडी कैविटी, अगर इनमें बॉडी कैविटी है लेकिन ये बॉडी कैविटी आप देख रहे कि ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान है, ये जो मसल लेयर है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके दरमियान है. तो सच बॉडी कैविटी which develops between the mesoderm and endoderm is called false body cavity or pseudocoelom, and those triploblastic animals which have pseudocoelom or false body cavity, they are called pseudocoelomates, right? Now dear students, look into the coelomates. Again this is ectoderm, ये जो black layer है outer, this is the ectoderm or outer body wall or outer body covering. जो ये जो ब्लू है दिस इज द एंडोडर्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल और गट, GUT गट. और अगेन ये जो रेड लेयर है, रेड पोर्शन है, दिस इज द मेसोडर्म. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास सीलोम है, यहाँ पे सीलोम है. बॉडी वॉल जो आउटर बॉडी वॉल है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके दरमियान एक स्पेस है, एक कैविटी है, ठीक है, एक बॉडी कैविटी है.
लेकिन दिस इज द ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम क्या होता है? डायग्राम से क्लियर है कि आप देख रहे कि यहाँ पे आप देखिए सीलोम जो है इट इज फॉर्म्ड विद इन द मीजोडम। जो ये सीलोम है, ये जो बॉडी कैविटी है, ये मीजोडम के अंदर ही बनी है। बाहर की तरफ भी यानी एक्टोडम की तरफ भी जो आउटर बॉडी वाल है उस साइड पे भी इससे क्या है, मीजोडम है, ये रेड टिश्यू है मीजोडम का। और इनर साइड पे भी एंडोडम की तरफ भी इनर साइड पे भी इट इज लाइंड by the mesoderm. So how can we define the true coelom? If the body cavity is formed, if the body cavity is formed within the mesoderm, अगर ये body cavity mesoderm के अंदर ही बने, if the body cavity is formed within the mesoderm and is completely lined by mesoderm, externally and internally, it is called true coelom. If the body cavity is formed within the mesoderm, वो body cavity जो mesoderm के अंदर ही बने and is completely lined, मतलब completely surrounded by the mesoderm, externally यानी outer side पे भी इसका क्या होता है, mesoderm होता है, और inner side पे भी क्या होता है, outer side पे भी mesoderm है और inner side पे भी mesoderm है। So such body cavity is called true coelom, and those triploblastic animals which have true coelom, they are called coelomates. So these are the body cavities formed within the mesoderm. mesoderm के अंदर है, बाहर की जानिब भी इसका mesoderm है, it is lined or surrounded by mesoderm, and inner side पे भी क्या है, mesoderm है, it is lined by the mesoderm. So such body cavity which is formed within the mesoderm and is completely lined, external side पे भी internal side पे भी by mesoderm, it is called true coelom. So this is true coelom which is filled with coelomic fluid, और इसके अंदर एक fluid होता है, coelom के अंदर एक fluid होता है which is called coelomic fluid. Now looking to this closer view, this is the true coelom. ये हमारे पास ट्रू coelom है जो कि mesoderm के अंदर ही बनी है, बाहर साइड पे भी mesoderm है और इनर साइड पे भी mesoderm है। तो डियर स्टूडेंट्स, this is the parietal layer. What is parietal layer? The outer layer. coelom का ये जो outer layer है, outer layer means यानी एक्टोडम आउटर बॉडी वॉल की तरफ इसका ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड पैराइटल लेयर, द आउटर लेयर ऑफ द सीलोम। और ये एंडोडम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ इसका ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड द विजरल लेयर, द इनर लेयर ऑफ द सीलोम। तो एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ट्रू सीलोम बनता है, दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडम। ये जितना भी रेड पोर्शन है ये मीजोडम है, तो ये मीजोडम जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब मीजोडम के सेल सेपरेट हो जाते हैं और एक स्पेस बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं, विच इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। तो मीजोडम का ये जो एक्टोडम की तरफ आउटर बॉडी वॉल की तरफ लेयर है, दिस इज कॉल्ड पैराइटल लेयर, और एंडोडम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ इनर जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड विजरल लेयर। So we can also define the true coelom as the space between the parietal and visceral layer. The space between the parietal and visceral layer is known as coelom, true coelom. And those triploblastic animals which have true coelom, they are called coelomates, right? So dear students, look in once again, what are acoelomates? A means without and coelom means body cavity. Now you already know the coelom. So those triploblastic animals which have no coelom or body cavity between the outer body wall ectoderm and the digestive tract endoderm, they are called acoelomates. And the space between the ectoderm and endoderm, and between the outer body wall and digestive tract, is filled with a loose cellular tissue called
mesenchyma or parenchyma formed by the mesoderm. So once again look into this diagram. This is the outer body wall, ectoderm. This is the digestive tract or endoderm, and there is no cavity between the outer body wall and digestive tract, and the space between the ectoderm and endoderm is filled by a loose cellular tissue called mesenchyma or parenchyma, which is formed by the mesoderm, right? And example of acoelomates are Phylum Platyhelminthes, which are also known as flat worms, right? Now what are pseudocoelomates? The pseudo means false and the coelom means body cavity. So those triploblastic animals which have a false coelom or pseudocoelom between the outer body wall, ectoderm and digestive tract endoderm, they are called pseudocoelomates. Now what is false coelom? If the body cavity develops between the mesoderm and endoderm, it is called false coelom or pseudocoelom, and these animals, the animals which possess false or pseudocoelom, they are called pseudocoelomates. And the false coelom or pseudocoelom, this body cavity develops from the blastocele of the embryo. Blastocele is the cavity of the embryo formed during blastula. What is blastula? The two-layered embryo. आपको याद होगा हमने पढ़ा था the two-layered embryo is called blastula, और blastula के अंदर जो cavity होती है that is called blastocele. So the body cavity develops from the blastocele of the embryo and not by the mesodermal splitting. तो ये जो false coelom है ये mesoderm के splitting से नहीं बनता बल्कि ये blastocele of the embryo से बनता है. Blastocele क्या है? The cavity of the two-layered embryo of the blastula is called blastocele. So if the body cavity develops between the mesoderm and endoderm, it is called false coelom. So again look into this diagram. This red one is the outer body wall or ectoderm. The blue one is the digestive tract or endoderm. And this red is the muscle layer formed by mesoderm. So here the coelom or here the body cavity is present, but this is not the true coelom, this is a pseudocoelom. आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो coelom है, ये जो बॉडी कैविटी है, ये मेसोडर्म, ये जो रेड लेयर है, और एंडोडर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान बना है. तो हमने पढ़ लिया कि द बॉडी कैविटी डेवलप्स बिटवीन द मेसोडर्म and endoderm. It is called false or pseudo